Okay, so today what we are going to do is that we are going to study about some graphs that are related to speed and time. Okay, so Okay. we are going to study about speed time graph, right? Speed time graphs, Mm-hmm. and we are also going to study about distance time graphs. Okay, is my screen visible to you? Can you see my screen? Yes. Okay, so the first thing is that whenever we make a speed time graph, okay, whenever we make any graph, there is an x-axis and then there is Yes. a y-axis. Okay, there's x-axis Yes. and there's y-axis. So x-axis generally, what we label x-axis is something that is independent. Okay, what does it mean? Something that is independent, uh, that is not dependent on the other variable, like time. Okay, so time is independent. Mm-hmm. It's always on x-axis and speed is always on y-axis. Okay. Okay. So what happens now is that, okay, what happens now is that, for instance, let's take an example, um, that uh, Mr. Ben, he goes to his office. Um, okay. He leaves his home at 10 a.m. and reaches office 10:40. Okay. 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 He stays there for 30 minutes and comes back home at 12 o'clock. Okay. 12 p.m. So this is a question which I have made on my own, that Mr. Ben goes to his office. He leaves his home at 10 a.m. He reaches at Yes. 10:45 a.m. He stays there for 30 minutes and comes back at 12 p.m. Okay. So Okay. the time he leaves his house, what time does he leave his house? 10. 10, right? It's going to be 10 a.m. Okay. And then he reaches his office at this. In fact, I've made a distance time graph. So let me erase this. It's not a speed time graph. This has to be a distance time graph. Assuming his office is, let's assume his office is 30 kilometer away. Mm. Okay. We'll do the real life examples as well. I've taken out a worksheet. Okay, so from 10 o'clock till what time does he reach his office? 10:45. Okay, from 10 o'clock, Yes. so for instance, this is 10:45. He has to travel a distance of how many kilometers? Was the total distance from his home to office? 30 kilometers. Okay, so he travels a distance of 30 kilometers, right? He travels a Yes. distance from 10 to 10:45 of 30 kilometers. Then he stays at Yes. office for 30 minutes, right? So 10:45, you Yes. add 30 minutes in 10:45. What's the new time? If you add 30 minutes in 10:45, what's going to be the new time?
Can you add 30 minutes in 10:45? Um, Okay. So if you add 15 minutes, the time is 11 o'clock. Then you add yes, 15 minutes again. So the time will become 11:15. So at yes, 11:15, he stays in office. So the distance he traveled is the same from his house. Okay. He haven't traveled any more distance. Okay. yes, And then he has come to his house at 12 p.m. So how far is he from his house? At 12 p.m., he reaches back his house. yes. Okay. So this is the distance time graph. Mm, Okay. A speed time graph. Let's go to a speed time graph. Okay. Speed time graph. Speed time graph is something like, okay, um, Mr. Bush. Let's call it Bush. Okay. He decides to go to another city. Okay. For first, his speed in city is, for instance, 20 kilometer per hour for 15 minutes. On highway, his speed is 100 kilometer per hour for 2 hours. Okay. And yes, for 20 minutes, he is stuck on a toll plaza. Okay. So for instance, if this is the graph, this is speed and this is time, right? So Mr. Ben decides to go to another city. Um, his speed in city is 20 kilometer per hour for 15 minutes, right? सर क्या समझा रहे हैं? yes. कौन आया अभी? अबू सर Okay, you are very late. नहीं सर मैं कब का था मैं कुछ बोल नहीं रहा था. Okay, we are doing speed time graph. Okay, ओके ओके okay. So uh, obviously he started with the speed zero, right? अगर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, अभी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन चलो इसको कंसीडर करते हैं. ओके. तो जब कोई भी बंदा कार स्टार्ट करता है तो उसकी सडन स्पीड होती है. फॉर इंस्टेंस ये 20 किलोमीटर उन्होंने रीच कर लिया एंड किलोमीटर पर आवर 2 मिनट्स में, राइट. उसके बाद 15 मिनट्स तक उनकी स्पीड 20 ही है. तो ये वाला ग्राफ इस तरह 20 पर ही रहेगा. ओके. कितनी देर तक? 2 मिनट्स में 20 पे पहुंचे. तो यहाँ पे कितनी देर तक रहेगा? टाइम है तो ये 10 o'clock से फॉर इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं. 10:20 तक वो इसी स्पीड पे रहे. ओके. इनफैक्ट 15 मिनट्स, 10:15 तक वो इसी स्पीड तक रहे. फिर वो हाईवे पे चले गए और उनकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स. तो वो 2 आवर्स तक हो गए 12:15 और उनकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर. ओके. और उसके बाद वो टोल प्लाजा पे स्टक हो गए फॉर 20 मिनट्स. 12:35 तक वो टोल प्लाजा में जब स्टक हुए तो उनकी स्पीड जीरो होगी. ओके. यहाँ से इस तरह जीरो होगी.
अच्छा, अभी आपको पार्शली समझ आई होगी, मे बी अभी आपको शायद समझ आई हो 20% to 30%। ओके, शायद आप लोगों को इतनी समझ आई हो कि कंप्लीट आपको भी समझ आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के देता हूँ। तो मैं ये आपको, नया चैप्टर है। हाँ जी, मैं आपको क्वेश्चन बता, सर मुझे तो समझ आया। समझ आ गई है। हाँ जी। ओके, बट लेट मी गिव यू दिस। एक ओके, क्वेश्चन देते हैं सर, फिर पता लग गया। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि हमेशा जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, अगर ये स्पीड है और ये ग्राफ है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। जी जी जी। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ की जो एक्सेल ग्रेडियंट होता है ना, ये जो हम्म, ग्रेडियंट होता है, हाँ हाँ जी। जी। ये इसकी एक्सेलरेशन होती है। ओके, हाँ, ठीक ठीक। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होगा, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो इसकी स्पीड होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना वो तो। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ओके, तो इसको मैं रेस कर ओके। दिया। ओके, पहले का आंसर शायद 5 है। ओके। 5। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं। हाँ, लिखा हुआ कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मिनट्स। ओके, V2 माइनस V1। अब ये देखो, एक इसका कोऑर्डिनेट आ गया वाई एक्सिस का 4, 4 आया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड इसका कोऑर्डिनेट था 0 0। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन है वो कैसे आएगी, ग्रेडियंट निकाल के। अब ग्रेडियंट इसका कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 ओवर और x2। x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर सपोज ये x1 था, या ये x2 था, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। 0.75। ओके, सो लेट्स सी, 3 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 4। 0, so it's 3 over 4, 0.75। Okay, ठीक। so the gradient is 0.75 meter per second square. Okay, okay, next ठीक। calculate the average speed for the first 15 minutes. सेकंड्स। For the first, calculate the average speed for the first 15 seconds. Okay, so what is going to be the average speed for the first Can turn it down. डिस्टेंस 15 ओवर टाइम। डिस्टेंस distance, ओवर टाइम। distance over time, but what is the distance? That's not given. Okay, हाँ, वो तो निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस हम। जी, कैसे तो निकाल सकते हैं। एक एरिया निकाल के हाँ जी, अंडर ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, ऑफ अ पहला ट्रायंगल है, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ। You can turn it तो एरिया कितना है, इसका कितना एरिया होगा 1 मिनट। ट्राइंगल का, 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 6 होगा। 6। 6 मीटर्स। 15 माइनस 4। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल का क्या होगा एरिया, 11 × 3, 3 33। 33। ओके, 39 टोटल का होगा। 39 मीटर्स। तब इसमें एवरेज स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, तो आ गई 39 डिवाइडेड बाय
15. 15. What is 39 divided by 15? 39 divided 2.6. 2. 2.6 meters per second. Okay, 2.6 meter per second. Well done, Hamza. Okay, well done. Okay. Um, Now I don't understand you people when I've shared everything on the group. Why are you calling me? Who is calling me? Someone was calling me. How many of you are over here? समीउल्लाह नसरुल्लाह मैं और एक हुजैफा नवीद पता नहीं कौन. Okay. So he's also my student. He wanted to understand this. Okay. So let's go to the next question. Now, जी. Abuzer, you have to stay quiet, right? ओके. And Nasrullah will answer me these questions. Okay. Samullah, you're also here, right? Samullah, are you there? Yes, Samullah is also there, but he's not speaking anything. Okay. Nasrullah, Nasrullah, are you there? Where are these? Sorry, sir. Mine keeps disconnecting and then reconnecting. Oh, okay. You need to have a better internet connection, right? Yes. So the graph shows the train journey between Tana, Mira, and Expo in Singapore, right? This is the graph. So the first thing you need to do is that it says you need to calculate the acceleration of the train when it leaves Tana, Mira, right? So Yes. from here till here, you need to tell me the acceleration of this part. So why is it not working? Okay, okay, now it's working. So calculate the acceleration of this part. So tell me two coordinates which will need for the acceleration of this part. J. Mr. Nasrullah. Abuzar, is he disconnected again? He नहीं. is in the और अच्छा bathroom, उसका sir. Okay, Samila, you tell me. Yes. Tell me two coordinates. Sir, this would be sir, this would be 21 over 20 Now it's 20. or 20 over 21. Yeah, 20 comma 21. कोमा. Okay. The other coordinate, what is this coordinate? 0 0. 0 0. Okay, stop telling him. Okay, 0 0. So we need to calculate the acceleration. 0 over 0. Yeah, if we need to calculate the acceleration, we need gradient of this line. Okay, so what is the gradient of this line? Y2 minus y1 over x2 minus x1, right? So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, so what I need to do is 21 minus 0 over 20 minus 0. So it's going to be 21 over 20. What is 21 over 20? 1.05. 1.05. Yes. Okay, 1.05 meter per second square. Is it meter or is it in kilometers? It's in meters. Okay. So the answer is 1.05 meter per second square. The distance between Tanamira and Expo. What is the total distance?
This is Tanamira and this is Expo. So what is the total distance? How do we calculate the total distance? Samyullah? Samyullah, how do we calculate the total distance? Okay, the total distance is 6 ओ सर मुझे आंसर आया आ गया no, the total distance S- of a speed Um, time graph, okay, is area under the graph. Okay, what you need to do is you need to calculate this entire area, right? This entire area. So this is a trapezium. Is it a trapezium? If you see this shape carefully, it's a trapezium, right? This length is 180. This height, what is it? 21. अब उधर ये वाली लेंथ कितनी आई है? It's सर मैंने तो ये दो ट्रायंगल्स और एक दरमियान में ये लेकिन वो इस क्या तरह भी हो सकता है ये 140 है. ओके अच्छा तो आप करो 1/2 into sum of parallel sides वो हो जाएगी 140 plus 180 into height. What is height? 21. 1/2 into, you add them, 0, 2, 3. 320 into 21. It's going to be 32. It's going to be 16. Okay. What is 160 into 21? 160 into 21 Yeah. 3360 3360 meters. Okay, because this is in meter. आपका क्या आंसर आ रहा है? आपका क्या आंसर है अबू सर? मेरा सर मैं निकाला नहीं मैं रुक गया था आप कह रहे थे वो दूसरे तरीके से भी होना Okay. ट्रेपीजियम से Why is Sheikh Hamza raising his hand again and again? Where is he? तो उसे समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछ ही जा रहा है मैसेज में मैं उसे वही बता रहा था ये raise hand कैसे कर रहा है अगर ये है ही नहीं? पर उसे उसकी मुझे लगता है ऑडियो उसकी म्यूट है कुछ उसे समझ नहीं आ रही Sheikh Hamza was here, but now he's not. He's gone now. Okay. Okay. So you're done this question. Next question. Who is going to do next question? मैं कर लेता हूँ सारे कर लेते हैं सर आंसर बता देंगे बाद Okay. Do this A part. Just do the A part. क्वेश्चन नहीं आया सर No, the question is over here on the screen. वो तो आपने सॉल्व किया हुआ है ना नहीं ये वाला तो नहीं किया हुआ. Question number 3 नहीं आया अभी 1.0 तक. उधर तो पुराना क्वेश्चन आ रहा है इधर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा एक सेकंड. अब आ रहा है? नहीं हाँ आ गया ए पार्ट Only do A part. can you ठीक text it to सर आ गया This boy is
There's something how to open mic. Okay, there उससे नहीं would be this 0. Hamza, जी, there would be this mute, okay, sign somewhere. The app is saying your microphone is muted, so unmute it. This is how you unmute it, and this is how you unmute it. Okay, you click on it, and then you it will get unmuted. Okay, what is your answer, Abuza? 0.6. Okay, Samiullah, what's your answer? Abuza. Samiullah Nasrullah, what's your answer? Samiullah, what's your answer? Nasrullah, what's your answer? Okay, they don't have any answer. Okay, look over here. One coordinate will be 0 0. Okay, the other coordinate is going to be, it says A from third. it's not going to be 0 0. It says the truck accelerates from rest to 18 meter per second in 30. Okay, so it's going to be 0 0. रेस्ट 0 0 ही है ना सर, ये Yeah, सबसे 0 नीचे 0. Yeah. Okay, the other coordinate is going to be 30 and 18. 18. Okay, so this part, the acceleration is going to be the gradient. Okay, y2 minus y1 over और x2 minus x1. Okay, so this is going to be 0.6. 18 divided by 30. 18 minus 0, 30 minus 0. So what is 18 divided by 30? 0.6. 0.6 meter per second square. Okay, well सर done. हमजा ने अभी तक म्यूट किया हुआ है। Well done, Abuzar. Try अब can हमजा listen का now. अनम्यूट हो गया। Okay, Hamza, assalamu alaikum. शुक्र है। Okay, सर वो सेटिंग से जाके मैंने ठीक किया। okay, listen. So that's okay. Next part. Too small. Okay. Next part is the truck then slows down for 10 seconds for some road work and travels through the road work at 12 meter per second. At the end of the road work, it accelerates back to 18 meter per second in 10 seconds. Find the total distance traveled by the truck in 100 seconds. Okay. ये total distance पता है कितना है? 100 seconds का ये तो total distance कितना है? हाँ ये कैलकुलेट Total distance कैसे आता है? Area under the graph. Area under the graph. सर ये कौन सा चैप्टर है? ये नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया. Area under the graph. नहीं, Okay. So how to D3 में से? calculate the area under the graph? What I need to do is, ये तो अजीब सी शेप है, तो मैं एक लाइन इधर बना देता हूँ. Okay. जी और एक इधर बना देता हूँ. तो बेसिकली अब ये हो गया वन ट्राइपीजियम. ट्रिपीजियम ट्राइपीजियम हुआ ना? जी या अगर इस तरह नहीं करना तो एक लाइन इधर बना देता हूँ. ये एक हाँ ये ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया, ये थर्ड ट्रायंगल हो गया, थर्ड और ये वन रेक्टेंगल हो गया. जी राइट. इन सारों के एरियाज इंडिविजुअली निकालो और उसको ऐड कर दो. अच्छा अच्छा सर ये कौन सी है, वो क्या नाम है, कौन सी D3 का कौन सा वो है चैप्टर? आई थिंक ये D3 में नहीं होगा, ये सर D4 में होगा, काइनेमैटिक्स.
अच्छा kinematics। ये वैसे सर हमने फिजिक्स में पढ़ा हो। हाँ फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको आज सर करवाया। ये मैं वैसे पढ़ रहा था, वो एक कजन है वो पढ़ रहा था, तो फिर मेरा वो सर मुझे भी पढ़ा रहे थे, ये मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहा हूँ। ओके सर अब D4 में से भी करना है? जी जी 32 10 सर कल भी इसी टाइम क्लास है? इंशाल्लाह इसी टाइम होगी। So tell me the area, be quick. 1170 1170. Your answer is 1170. 1170 meters. Okay, let me see. Okay, this rectangle is from 100 to 20. It's 80. Multiply by what is the length? It's 12. So what is 80 into 12? 80 960 80 into 12. 960. Okay. Hmm. Plus this triangle is 20 and the height is into 8. 12 1 over 2. So this will be 1 over 2 into 120 20 हो जाएगा। into 12. Yeah, 120. 120 Plus सर आपने पेपर इस चेक कर ट्रायंगल लिया? की नई पेपर नहीं चेक हुआ है। 12 से ये 6 आ गया, ये 20 से 40 जी 20 है, तो ये आ ये गया 60 60 आ गया। 60 हो ये जाएगा हो रहा है और वो दूसरा ट्रायंगल 30 10 है 30 और ये 6 है, तो ये हो गया 30। 30 ओके, आपका भी यही हुआ? हाँ जी यही है। तो अब आंसर आया 960 टू प्लस 210 आ गए तीनों 20 ट्रायंगल्स प्लस का। 60 प्लस 30 1170। Yes. हम्म, Hamza, we don't need your camera. सर गलती से दब गया था। Okay. I know you must be quite well dressed, but we don't need to see you right now. शाहजेब भी आ गए। हाँ शाहजेब सर Okay. गलती से हुआ है। शाहजेब Question number 4. Do question तभी number माइक 4. बंद है। अच्छा Okay, do question number 4. ओके ओ पहला हो गया सर। Okay. How did you calculate it? 80.6 ये वो ट्रायंगल था एक और एक रेक्टेंगल था। हाँ, लिखा हुआ है calculate the distance he runs for the first 8 seconds. 8 सेकंड हाँ जी 80 तो 80.6 ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। Okay. जी तो पहला ट्राइंगल था 1/2 into 3 into into 3 into 12.4। 4 ठीक है, जी प्लस करना है, यहाँ से 3 से 8 तक 5 है और ये 12.5 है, हाँ जी 12.4। 12.4 12.4 जी, तो इसका क्या आंसर आएगा? मेरा 12.4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा इन 62 दोनों के इन प्लस दोनों 80। के मुझे आंसर्स बताओ। इसका पहले क्या का तो आंसर है? 80.6 80.6। टोटल का आंसर 80.6 तो ओके, टोटल का आंसर 80.6 है। रेक्टेंगल का आंसर 62 है। रेक्टेंगल का आंसर सर 62 है और इसका क्या आंसर है ट्राइंगल का? ट्रायंगल का आंसर है एक मिनट 18.6। 18.6। ओके, सर मैं एक लाइन लगा लूं, मुझे वहां की समझ नहीं आई। लगाओ लाइन, उसको रेज भी करना है, ये भी किसी ने लाइन लगाई हुई है।
कर देता हूँ। करेंगे अब। अरे ये जो है ये रेक्टेंगल की यहाँ तक आएगी। हाँ जी, ये रेक्टेंगल की यहाँ पे क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आई रेक्टेंगल यहाँ की से। यहाँ तक इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ 8 सेकंड्स तक लगाना है आंसर। जी तो ये जी वाला पूरा रेक्टेंगल हो गया, ये वाला जी। पूरा, ठीक है। L into B लगा देंगे। हाँ, L/B, जी जी। और ये वाला पूरा ट्रायंगल हो गया, जी ठीक है। जी अच्छा, अब हमारे पास लास्ट 1 मिनट रह गए, उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। आप लोगों ने दोबारा इस लिंक को, जूम के लिंक को कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन अच्छा ठीक टाइप करेंगे। तो मैं ठीक। इसको एंड करो मीटिंग को, और दोबारा